sperms, how the sperm reaches. It is released into large number. अजून काय म्हटलं? हो ना, पण लार्ज नंबर मध्ये अजून काय काय सांगितलं? 2-3 गोष्टी सांगितल्या ना. साइज ऑफ द स्पर्म इज बिगर. का? कारण फर्टिलायझेशन इज बाय चान्स अँड स्पर्म ची मुवमेंट इज डायरेक्शनलेस, राईट? त्याला कुठले डायरेक्शन नाही, त्याच्यामुळे fertilization is by chance. What is there? So sperm, they are highly motile. So there is a lashing movement of sperm. Ka? Karan because there is a mitochondria. है ना? Mitochondria in the middle piece region. Right? त्याच्यानंतर what are there which help the sperm to go towards fertilization. So first of all, it is काल आपण बघितलं की it is produced in large number, है ना? Egg size is larger than the sperm, so lashing movement of mitochondria because they are motile. Okay, fertilization is species specific. का? कारण तिथे fertilizing आणि anti-fertilizing reaction. Fertilizing is present on ova. Anti-fertilizing is exactly complementary to that fertilizing, and so fertilizing anti-fertilizing reaction होते, ते एकमेकांना ओळखतात, ते एकमेकांना compatible होतात, and then the process go ahead. Okay, त्याच्यानंतर there are the prostaglandins. काल आपण फक्त इंट्रोडक्शन केलं होतं ना. Prostaglandins which are released. There is a strong contraction during this copulation. There is a strong contraction in the vaginal part of fallopian tube which releases prostaglandins. Leha, keep writing. And so there is a suction due to release of this prostaglandin because there is a strong contraction. Suction movement of the uterus can be observed. Suction movement. मग तो uterus ते sperm ला suck करायला लागतो. Okay. So there is a suction movement of uterus, right? There are certain barriers as well from the female reproductive tract. Barrier from female. So why? Because there are so many sperms are released, and all sperm did not reach towards the fallopian tube. So many of the papers or many of the sometimes the question may be asked, where does the fertilization occur? So there can be the ampulla region, or some might say ampulla ischemic junction. Ampulla ischemic junction or ampulla region. So both the answers are correct. Fertilization कैसे होता है? So they are released in large number, 200 to 300 million sperm. There is a lashing movement, so a motility movement because of the mitochondria. Mitochondria which are present as what sheath? So we have drawn this particular diagram. नाही रे, आणि ही त्याची टेल. आणि इथे आपण म्हटलं की mitochondria are arranged spirally and so in the sheath like pattern. So that is called as a Nebenkorn sheath. Sperm ची मी पाठवले होते फोटो ग्रुप वर. Okay. Now some barriers. So out of these 200 to 300, very few should reach to the female tract. So there are certain barriers from the female reproductive tract. काय काय barrier आहे बघा. There is a thick endometrium which is not allowing so many sperm to reach to the fallopian tube. मग जे काय म्हणतात ना त्याला, natural selection, survival of the fittest. जो fit sperm असेल तो जाईल. Then there is the acidic pH because of the acidic pH in the female reproductive tract. Acidic pH in the female reproductive tract. So acidic pH मुळे काय होतं, बरीचशी sperms मरून जातात. Okay, and then
There are certain local phagocytic cell also in the female reproductive tract, and this phagocytic cell also phagocytose some of the sperm, and so only so many sperms are released. Acidic pH in the female reproductive tract. Yes, na? And some phagocytic cells are there in the female reproductive tract. So these phagocytic cells kill many of the sperms. So हे सगळे जे आहे ते सगळे barrier असतात for 200 to 300 million sperms. Species specific fertilizing anti-fertilizing reaction. Prostaglandin which are there in the female reproductive tract, which gives a strong contraction. So prostaglandin basically in the vaginal part, so that gives a strong contraction, and there is a suction movement of uterus which helps sperm to come ahead. So these are some helping points and these are some barrier points. And because of all this barrier, only few hundred sperms are entering or reaching up to the fallopian tube. Okay. Speed of the sperm is 1 to 4 mm per minute. 1 to 4 mm per minute. Four mm per minute. इतना स्पीड होता है. And then we started with the events in fertilization. Erase करू हे सगळं. Are you able to hear? अगार्गी ऐकायला येतंय? मॅम जे तुम्ही हो ऐकायला येतंय मॅम, पण इथे थोडा नेटवर्क इश्यू होता स्टार्टिंगला, तर तुम्ही ते बॅरियरच्या वरती काय एक्सप्लेन केलेलं? See, fertilization कसं आहे? Fertilization is by chance. है ना? Sperm गेले म्हणजे there is no sure shot guarantee that fertilization will happen. पण मग some process should be there to enhance the process of fertilization. But what are the processes or what are the things which enhance the sperm to fuse? So एक तर sperms are released large in number, काल आपण बघितलं. Ovum is larger in size than the sperm. There is a lashing movement, म्हणजे highly motile movement of the sperm because of this Nebenkan sheath which is there in the middle piece. So Nebenkan sheath is basically the mitochondria which are arranged in the ribbon format in this middle piece. Then it is a species specific, काल आपण explain केलं. So fertilizing anti-fertilizing reaction makes it species specific. काल आपण म्हटलं, you may get question why the syngamy or fertilization is species specific, है ना? So fertilizing is present on ovum and exactly complementary. काल मी असा डायग्राम काढला होता ना. Here is a fertilizing आणि त्याचा exactly complementary it is there on the sperm. So this is the fertilizing, this is the anti-fertilizing. So this fertilizing anti-fertilizing fits first. So when they are compatible, when the ovum says, yes, I am accepting you, then the process will go ahead. And so these are the some processes which help the fertilization, and these are certain barriers. Why? Because 200 to 300 sperms are, million sperms are releasing. आणि मग एवढे सगळे should not reach to the fallopian tube. Fallopian tube कदाचित ते ब्लॉक पण करून टाकतील. हो ना? So only few hundred out of that should reach to fallopian tube. And hence, these are the things which inhibit the action of sperm. So thick endometrium, acidic pH, phagocytic cell. And all these inhibit the process of or the upward movement of the sperm, ascending movement of the sperm. And hence, only few hundred sperms are able to reach to the fallopian tube. Right? Yes? Yes. Okay. Now, going ahead, so what are the steps in the fertilization? Steps in fertilization. चलो अभी पूरा प्रोसेस करते हैं. So the first, कल मैंने थोड़ा थोड़ा बोला था like capacitation I explained, but we'll start from beginning. Okay. Now the first step is there is a removal of
sterols and glycoprotein from acrosome. Acrosome is what? Sperm का head. अभी क्या होता है? See this. I will just draw the sperm head here. So this is the sperm head. यहाँ पे what is there here? And what is this? What is this? Acrosome. Okay. And on the surface of this, there are the sterols and glycoprotein. So these are sterols and glycoprotein. Okay. अभी acrosomal reaction initiate करने के लिए this sterol and glycoprotein need to be removed. Okay. So what is happening? See, when the sperm is approaching to the ovum, there is a rapid influx of calcium ion. There is a rapid influx of calcium ions. Okay. Calcium ions यहाँ पे अंदर आना शुरू हो जाते हैं. जब see when this egg and the sperm का अभी कांटेक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर के ये ग्लाइकोप्रोटीन निकलने चाहिए, तभी वो अपना एक्रोसोम को यूज कर सकता है. तो पहले कैसे होता है कि ये सब जो है कैल्शियम आयन रिमूव हो जाते हैं एंड सो द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज इनहांस्ड. Okay, as soon as it enters inside the female reproductive tract, sperm, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है. एंड जब वो which is approaching towards the fallopian tube, तो ये पूरा उसका स्टीरोल एंड ग्लाइकोप्रोटीन निकल जाता है. ओके. Second important event, yesterday I told you the capacitation, है ना? नहीं, second is first is हाँ, मतलब capacitation पहले हो जाता है. Capacitation is what? What is a capacitation? मॅम ते इन्फ्लक्स ऑफ Ca2+ आयन्स होतं तिथे आणि मग काय होतं? मग हा ऍक्रोझोम फ्री होतो त्याची रिएक्शन दाखवायला. आधी कॅपॅसिटेशन होतं, काल मी एक्सप्लेन केलं होतं कॅपॅसिटेशन. As soon as it is entering into the, so this is a, है ना? From here the sperm is entering, right? Sperm enters, तो उसका पहले कैपेसिटेशन होता है. तो कैपेसिटेशन yesterday I said कि this is very important for MCQ. के बाद, कैपेसिटेशन के बाद होगा. So first event यहाँ पे मुझे कैपेसिटेशन लिखना चाहिए था. Yesterday I explained you. तो क्या होता है कैपेसिटेशन? So कल मैंने स्लाइड भी दिखाया था ना. कैपेसिटेशन इज व्हेन वो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है ना स्पर्म में. Yes, so there is a, ये मैंने स्लाइड भी दिखाया था ना. During ejaculation, semen is ejaculated into the vagina, that is a insemination. Spermatozoa acquire the ability to fertile the ovum only after it is undergoing certain functional maturity. So functional maturity is occurring into the female reproductive tract. यहाँ से जाता है वो, तो उसको functional maturity जो आती है, जो gain करता है, that is called as a capacitation, right? That is called as a capacitation. ठीक है ना? तो उसका capacitation होगा पहले, फिर उसका वो सब स्टीरॉइड वगैरह निकाल देंगे. ओके. एंड देन it will be having the fertilizing anti-fertilizing reaction where it will be species specific, so it will identify the uniqueness. So fertilizing anti-fertilizing reaction के लिए I said some receptor. Which are the receptor for the fertilizing? Yes, ZP2 and ZP3. See here, there is a receptor. So the third thing is fertilizing anti-fertilizing reaction के लिए you have this Z2, ZP2 और ZP3. Z भी लिखा होगा या ZP3? I can't see your screen. Screen नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करो.
हॅलो, रिफ्रेश करून बघ, इथे दिसतंय कारण सगळं गार्गी. यू आर युजिंग मोबाईल डेटा और वायफाय? नहीं नहीं गार्गी, गार्गी ओपन करा तो कोणीतरी. कोण करतंय? हाँ बायोलॉजी वाले, पासपोर्ट बायोलॉजी. यस दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है गार्गी, यू जस्ट रिफ्रेश. दिख रहा है ना ये सब? नहीं है ना? अच्छा प्रीशा है, ओके. बघणं नाही होत ना, मग ते कुठे बघता तुम्ही रेकॉर्डिंग रे? चलो तुम एग्जिट हो जाओ. एग्जिट हो गए ना? करो. उसको पूछो तुम कहाँ पे, कहाँ से अटेंड करे, वाईफाई या डेटा? मोबाइल डेटा होगा तो फिर पुअर ही दिखाएगा थोड़ा कनेक्शन. बोलो आपण माझं रेकॉर्डिंग. किया कॉल? बिजी आ रहा है. ओके चलो. सो क्या हुआ फिर? कैपेसिटेशन हुआ, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हुआ. ओके वहां पे द रिसेप्टर ZP3 वाज इंपॉर्टेंट, है ना? सो यू हैव सीन, मैं बाद में तुमको दिखाती हूँ स्लाइड. सो ZP3 रिसेप्टर वाज इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट इज रिलीजिंग व्हाट? एंजाइम्स. व्हिच एंजाइम्स इट इज रिलीजिंग? फ्रॉम द एक्रोसोम. एक्रोसोम में कौन से एंजाइम थे देखो. ओके बोलो. So this was a ovum. Ovum is having the non-cellular layer, that is a corona radiata. This is the fourth pointer. Fourth is na? Ha. hello Now the ma'am. acrosome. Yes, are you there? Gargi? Yes ma'am, I'm joined. Is it clear Yeah to ma'am, you? the network is very bad, that's why I'm getting So Wi-Fi disconnected or bar mobile bar. data you are using? Gargi? I was on Wi-Fi, now I shifted. Ma'am, I was on Wi-Fi, but now I shifted to mobile data because the Wi-Fi like it's going again and again. Okay, because here Prisha tested, so everything is very clear. Hello. Ha. Can you hear? Hello. कुछ तो प्रॉब्लम है उसका. चलो. So here there is a zona pellucida. Hello, Zona ma'am. pellucida, you know, it is a non-cellular layer. Okay. Corona radiata is having hyaluronidase. ये फॉलिकुलर सेल से बनता है और इसके बीच बीच में सेल को ज्वाइन करने के लिए देयर इज अ हाइल्यूरोनिक एसिड. हाइल्यूरोनिक एसिड बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में होता है. इफ यू गो बैक एंड चेक कनेक्टिव टिश्यू. हाँ तो देखो.
सो ये सबको ब्रेक करके स्पर्म हैज टू एंटर इनसाइड. नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि होल स्पर्म इज एंटरिंग इनसाइड द ओवम. इन केस ऑफ मैमल काफी बुक लिखते हैं कुछ उल्टा पुल्टा, लेकिन दिस यू मेक इट अ हाईलाइट पॉइंट दैट whole of the sperm is entering into the ovum. सब कुछ जाता है अंदर. नहीं, फिर न्यूक्लियस ही फ्यूज होता है, लेकिन एंट्री कौन करता है? तो पूरा स्पर्म एंट्री करता है. सो मेक अ पॉइंट. ये और मॉड्यूल में भी मैंने लिख के दिया होगा. So the whole sperm is entering inside the ovum. पूरा sperm देखो, here you can see the complete sperm is entering inside. Okay. Now the acrosomal reaction में क्या होता है? देखो, now the next point is acrosomal reaction. हाँ, तो acrosome में which are the things हम लोगों ने लिखा था, देखो तुम्हारे इसमें होगा. हाइल्यूरोनिडेज और क्या बोलो, सबको मिला के लाइसिन बोलते हैं. हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन. तो ये सब एंजाइम इसमें होते. तो हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा? मैंने बोला जैसे कि कोरोना रेडिएटा है, उसकी सेल को फ्यूज करता है हाइल्यूरोनिक एसिड, तो वो ये हाइल्यूरोनिक एसिड को हाइल्यूरोनिडेज ब्रेक करेगा. ठीक है, पहले तो हाइल्यूरोनिडेज उसको ब्रेक करेगा. उसके बाद कोरोना को पेनिट्रेट करता है, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम विल कम इनटू पिक्चर. वो कोरोना रेडिएटा को लाइज करेगा, वो पूरी लेयर को. एंड जोनालाइसिन फिर विल पेनिट्रेट द जोना पेल्यूसिडा. ये सब करता है वो जोना पेल्यूसिडा के अंदर. वो जब घुसता है तो यहाँ पे नाउ दिस जोना पेल्यूसिडा विल फॉर्म द फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इवेंट लिखो, क्या लिखा पहले बोलो. हाँ, इनफ्लक्स ऑफ सी आयन. उसके बाद काय लिहिलं रे गौतम? तू नहीं लिख रहे तो मैं क्या करूं? पहले तो कैपेसिटेशन हुआ, उसके बाद इनफ्लक्स, रिमूवल ऑफ स्टीरॉयल एंड कैपेसिटेशन आधी, मग रिमूवल ऑफ स्टीरॉल, मग fertilizing anti-fertilizing reaction where ZP2 and ZP3 receptors. 4 सो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के बाद ये जो है कोरोना पेनिट्रेटिंग. यस, हाँ, तो ये जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा को अंदर जाके स्पर्म विल गो इनसाइड, है ना. तो इसके लिए हाइल्यूरोनिक एसिड यहाँ पे है, तो पहले तो वो हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा. कौन? हाइल्यूरोनिडेज. तो लिखो ये 4th पॉइंट. रिमूवल ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड बाय हाइल्यूरोनिडेज, रिमूवल ऑफ कोरोना रेडिएटा बाय कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, removal of corona radiata by corona penetrating enzyme, removal of zona pellucida by acrosine or zonalysine, removal of zona pellucida by acrosine और zonalysine. ये सब हो गया. तो द होल स्पर्म इज नाउ एंटरिंग, और उसको हाईलाइट करो. जब ये यहाँ पे अप्रोच करता है, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है, तो देयर इट विल फॉर्म अ 5th पॉइंट. देयर इट विल फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन कोन. कैसे? देखो, यहाँ पे ये जोना पेल्यूसिडा है, यहाँ पे वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड द एंजाइम और द स्पर्म यहाँ पे उसको अप्रोच कर लेता है. तो दिस इज अ, ये स्पर्म हेड है,
एक्रोजिन उसका रिलीज हुआ, उसके पास ये डायग्राम बनाओ, यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड दिस इज अ, ये न्यूक्लियस है, दिस इज अ फर्टिलाइजिंग कोन। हाँ, सब वॉल्स ब्रेक करने के बाद इट इज फॉर्मिंग द फर्टिलाइजिंग कोन एंड स्पर्म ऑलवेज एंटर फ्रॉम विच साइड? From which region? There is a, दो बोले थे मैंने, animal pole and vegetal pole. Hello ma'am. Animal pole. So sperm is entering from the animal pole. Okay. Hello ma'am. Can you हाँ hear me? गार्गी. हाँ ma'am, I joined right now because इथे नेटवर्कचा फार प्रॉब्लेम आहे, तर मी सगळं बंद करून मोबाईल डेटावर जॉईन केलाय. ओके ठीक आहे, मी जस्ट स्टार्टेड, 4th स्टेपच आम्ही करत होतो. सो करोना, ही करोना रेडिएटा लेअर आहे, त्याला हायल्युरोनिडेज आणि करोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम डॅमेज करेल, म्हणजे त्याला लाईज करेल. त्याच्यानंतर तो आतमध्ये येईल, इथे झोना पेल्युसिडाला, झोना पेल्युसिडा लाईज करेल ऍक्रोझिन, आणि जेव्हा तो लाईज करेल तेव्हा तिकडे एक कोन बनेल. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलायझेशन कोन. हा स्पर्म आहे, दिस इज अ स्पर्म. सो यू कॅन ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस इज अ स्पर्म and here there is a fertilizing cone, आणि हा स्पर्म मधला, इथे चेंज करते मी कलर, इथे हा स्पर्म मधला त्याचा न्यूक्लियस आहे. Okay ma'am, I'll write from the 5th step and then पहले 4 का I will watch the recording. Yeah. Okay. So sperm will enter from the animal pole and opposite there is a vegetal pole. So here there is a nucleus, or it is till it is a काय इथे ओव्हम आहे की उटीड आहे की सेकंडरी साइट आहे, काय तू काय शोधतोय गौतम? ते तुमच्या नोटबुक मध्ये करा, नंतर आपण एनसीईआरटी बघू. स्टिल इट इज अ सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अभी तक इसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ, स्पर्म अंदर गया नहीं. ओके, नाउ व्हेन द स्पर्म एंटर, सो 6 पॉइंट यू कैन राइट डाउन. 6 point, there is a start of meiosis 2. So metaphase factors here are deactivated. Metaphase factors are deactivated. And anaphase promoting factors are activated. Yeah, metaphase factors are deactivated and anaphase factors are activated. Anaphase promoting factors are activated. Ma'am, what is activated? Anaphase promoting factor. Anaphase होईल ना, मेटाफेज नंतर anaphase होते की नाही? And so hello, now this, yeah. Hello. Yes. हाँ गार्गी बोल. Ma'am, what phase factors are activated? Anaphase promoting factors are activated. Anaphase promoting factor, APE, anaphase promoting factor. Activate. Okay. Okay, and meiosis 2 is completed, and what is forming? What is activated? Anaphase. आणि anaphase complete झाल्यावर, so meiosis 2 complete झाल्यावर what is going to form? Ooted. आणि अजून second polar body. Second polar body will eventually disintegrate, and now it is a ovum. Now it is a ovum. ठीक है, चलो बहुत डिस्टर्ब करते हो, पूरा लिंक तोड़ देते हो. ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके,
Now the next factor is, next step कितनी ही 6 की 7 मैं अभी मैंने बोल रुकने वाली. एवरी टाइम यू डिस्टर्ब प्रीशा, अभी तुमको ध्यान दो, नहीं तो जो करना है वो करो. फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. Okay, this is called as a cortical reaction. This is called as cortical reaction. अभी स्पर्म अंदर एंटर कर गया है, उसने सेंट्रियोल दिया है, मेयोसिस 2 कंप्लीट हो गया है. तो ये जो जोना पेल्यूसिडा है, ओके, ये जो जोना पेल्यूसिडा है, इसके नीचे, सो दिस इज अ एक्सोप्लाज्म. जैसे अपना साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का बाहर वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सोप्लाज्म. दिस इज अ एक्सोप्लाज्म. ओके, यहाँ पे सब कॉर्टिकल एंड दिस इज द ऊप्लाज्म. ऊप्लाज्म मतलब ओवम का साइटोप्लाज्म. ओके, सो दिस इज अ ऊप्लाज्म. ये सिर्फ मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन निकाला है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. ये सब कॉर्टिकल जो ग्रैन्यूल्स थे ऊप्लाज्म के अंदर, वो सब ग्रैन्यूल्स आके यहाँ पे पेरिफेरी में आ जाते हैं, मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा के नीचे. सो दिस इज अ जोना पेल्यूसिडा. वो सब ग्रैन्यूल जोना पेल्यूसिडा के नीचे आके रुक जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्टिकल रिएक्शन. सो कॉर्टिकल, these are the thick granules, and this is now called as a fertilization membrane. Ma'am, ooted is formed in which step? तो ooted बन गया ना अभी. Now this is ooted only. तो फिर 6th में ही बन गया ooted? हाँ, 6th में ही बन गया. जब वो मेयोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो वो ooted बन जाएगा. ठीक है, तो फिर उधर मेयोसिस 2 भी कंप्लीट होगा. या सो मेयोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद जोना पेल्यूसिडा के नीचे कॉर्टिकल रिएक्शन होते. कॉर्टिकल इज व्हाट? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते. ऊप्लाज्म में देयर आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. ये सब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आके जोना पेल्यूसिडा के नीचे आ जाते. हाँ, सो दैट इज एक्सोप्लाज्म. नहीं तो ये एक्सोप्लाज्म का रीजन है, यहाँ पे सब आके ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे. सो दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. एक बार फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया तो नो मोर स्पर्म कैन एंटर इनसाइड. नो मोर स्पर्म कैन एंटर इनसाइड. So basically this prevents polyspermy. This prevents polyspermy. So one should only fuse with the nucleus of egg. इसीलिए fertilization membrane बनता. Getting this? मैम, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर दोस छोटे छोटे डॉट्स क्या आपने उसके नीचे बनाया? ये छोटे छोटे डॉट्स आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. मैम, फिर एक्सोप्लाज्म क्या है? एक्सोप्लाज्म इज दैट रीजन. ये अच्छा, पूरा ठीक जो है, वो रीजन है region. दैट इज एक्सोप्लाज्म. देखो ठीक सेल है. होता है, ये सेल है, जैसे ये ओवम है. चलो मैं सर्कुलर ही निकालती हूँ. ये ओवम है. ओके, ये हाँ. इसका पूरा साइटोप्लाज्म है. सो दिस इज साइटोप्लाज्म. हियर इज कॉल्ड एज ऊप्लाज्म. ओके. ऊप्लाज्म का ये पेरिफेरी पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म. ठीक है. एंड एक्सोप्लाज्म में आके ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल इधर आ जाते हैं सब. ठीक सो है. ये टफ बन जाता है मेम्ब्रेन एंड नो मोर स्पर्म नाउ शुड एंटर इनसाइड. सो दैट इज बेसिकली प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्म. तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म क्या? Cortical granule prevent the further sperm entry inside. ओके. Okay. यस. And now the next reaction, erase करूँ, लिखा है सबने? हाँ. Okay. And now the next reaction is fusion of gametic nuclei. Next, fusion of gametic nuclei. Now sperm तो अंदर चला गया.
ओके, सो ये ओवम का न्यूक्लियस. सो कैरियोगैमी कल हमने लिखे थे स्टेप्स, है ना. सो दिस इज अ कैरियोगैमी. So that is the fusion of these two nuclei. So this is a female, this is a male nuclei. So there is a fusion of male and the female nuclei. So that is a synkaryon. So first is a synkaryon, and synkaryon is followed by kunsa bolo synkaryon, or it is a karyogamy, and then it is followed by amphimixis. Amphimixis, so mixing of their chromosome. So this is now the zygote. This is now the zygote. Yes. Clear? Yes, ma'am. चलो, सो क्या हुआ, पहले कैपेसिटेशन हुआ. ओके, उसके बाद उसके स्टीरॉल्स एंड वो सब निकाल दिए गए, सो दैट फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हो. हियर ZP2 एंड ZP3 आर इम्पोर्टेंट. ओके, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन के बाद बोलो, चलो फटाफट बोलो. वो तो पहले ही हो गया ना, इसके पहले. सो दैट तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हुआ. हाँ, तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन के बाद स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा. तो ऑल एक्रोसोमल हेड, एक्रोसोम के सब एंजाइम्स वहां पे एक्टिवेट होंगे. Sperm will enter inside. Meiosis 2 is completed. Fertilization membrane is formed. Yeah. Polyspermy is prevented. And then there is a fusion of these gametic nuclei. So karyogamy, fusion of nuclei, followed by amphimixis and formation of zygote. These are the stages. I hope you have understood. Yes, ma'am. Ma'am, तो फिर 9th is zygote formation, मतलब it's not part of the 8th step. हाँ, so finally zygote is formed. What should be the result of fusion of male and female nucleus? The zygote should form. Zygote formation. Okay. Okay. हाँ मैम, so second step was that only ना, वो ग्लाइकोप्रोटीन के वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करता है. हाँ, और वो निकाल देता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है, फिर थर्ड में सिर्फ ये है ना, एंट्री ऑफ स्पर्म, और फोर्थ में meiosis 2 begins. Yes, you can refer to your this ray diagram also. Sperms अच्छा, इसमें दिया है, तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है. हाँ, ओके. Okay. So what is the use of fertilization membrane? Yes. So yes, sir. Now I am closing this session. Gargi, you can come for the next session. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोल, अभी क्या था तेरा